वो तो रिवाइव दे रहा था भाई। अरे नहीं, उसको लगा मेरा फुटस्टेप। She is good. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. Stop it now. सारे डेटा मिशन ऑपरेशन Don't talk, कॉम्प्लेक्स don't talk. रूम में Why? आइडिएशन Live is going on, के man. द्वारा Okay. जो कि लगातार लैंडर के Understood. कनेक्शन में बना हुआ Take है that mic. प्रदान कर रहा है। ఏదో మైక్ ఉంటాయి కదా నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. Keep it in Instagram, man. Then everyone. I don't have Instagram. Then how you are using YouTube, man? How means from YouTube only? No, man. Oh, Insta. They are clapping. हाँ, अब हम देख What सकते happened? हैं रफ ब्रेकिंग That's why I'm not focusing, na. That's why I don't know what happened. No, that thing, I No, think man. speed. That speed land was started decreased. now. Through. Now listen No, them. During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from Okay, 30 here now. kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है और ఈవెంట్ చూసారు अब కెమెరా अब तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। Event, man. He's saying technical things. Yeah, please. And they will tomorrow they will let. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly Hey, now 30 730.5 kilometers left kilometers. only. See, it is there here.
वाटतं का कमी होतं डिस्टन्स? जी हाँ, Distance traveled. कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। मला धगधग व्हायला लागली. Thrusters कसं वाढले? ఇటు పోతా ఉంటుంది మళ్ళీ దాన్ని ఇటు తిప్పాలి पावर React डिसेंट बिना वो की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सदी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। ఏడు ఉంది ఇప్పుడు చూడు The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. चलो निकल During the next phase, which is going to be altitude the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. అవి సాప్లర్ అనిపిస్తుంది ఏడు ఉంది ఇప్పుడు ROCCL अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। 31 किलोमीटर. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. GRC चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे ये सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। लास्ट टाइम इथं आलता वन इस मिशन में किती सेकंड और 9 थर्ड काय ऑर्डर ते राहिलं होतं. गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग 300 हुआ है, मीटर राहिलं. जो तीन कि किलोमीटर इनर्शियल राहिलं. थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical 29. velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. ఎనీ వార్నింగ్ जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन How पे do you देख know she सकते or हैं कि लैंडर They are watching live, मॉड्यूल right? की शुरुआत में Video is वेलोसिटी there. 1680 मीटर हाँ, पर okay. सेकंड थी, We'll see ना. लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। चलाएगा गाड़ी चलाना यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan-3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down, and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds.
the lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम 15 मिनट ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। It should miss more than 10 minutes. No one started. 605 अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। 22 किलोमीटर इंडिया के अपेयर सर हाईएस्ट The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer. Is currently 22 kilometers, which is again going to be coming down, and that is expected. తగ్గకపోతే కష్టమే. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. సిగ్నల్ కట్ అయిపోయింది. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during Listen, this yaar, phase what is you saying? 713.5 kilometers. just जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। How many watching? Huh? How many? It started crashing. At the same time, you can see the altitude High of the payload is there lander on my just side. 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the Previously I lander didn't imager give camera any has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। Live stream. अब तक लैंडर लगभग जवळ चालले जवळ. अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। ಇಲ್ಲ. One time. After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. Who kept man? The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. Keep like this. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं Just 10 kilometer. जो करंट It is आल्टीट्यूड going है too fast, man. They are not चंद्रमा की decreasing the सतह से speed. Maybe it will crash. 10 Just listen किलोमीटर के and आसपास। watch carefully. जी हाँ, हम अपने My heartbeat is increasing. जी हाँ, 8 हमारे किलोमीटर। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए। Live chat you are not seeing, huh? Live chat. I can see. What message came? Raju, stop live. 7 kilometer. Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us.
जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। It's too close now. 5 kilometer only. Just. We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, टिल्ट जैसा खिलाना कि है। सिंह जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग Last 800 time we मीटर crashed here. वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से Stop लगभग यार। 1 किलोमीटर से कम हो चुकी है। ఎందుకు అన్ని వాటిని అన్నీ విన్నానయ్యా, మనం తీసుకొచ్చాను. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. Just last 1 kilometer, 2 kilometers. నువ్వు ఆ పక్క పెట్టినావా? అది ఆ పక్క. यार we are so near. आवाज आहे नाही तर Mr. Modi came live. मोदी लाइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ఈజ్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా जी हाँ, Yes. अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई 1.2 लगभग kilometers. एक Too close. Until 800 किलोमीटर के meters it आसपास will go है। the speed. Later they will change. the Oh, rate. just few seconds. No man. Hey, zoom in. Now from zoom 1 in. kilometer only it will take more time. See, now Yeah, it will go yeah. slow. We are nearing the final phase of the power descent, 16 meter per which is second. going to be the vertical descent phase or the Ooh. local navigation phase. Oh, 11 graphics 7 weeks. Graphics ఏ. Hey, landed. फाइन ब्रेकिंग फेज No. के Ah, done. Done. And last time also this. No, now it will definitely land. it will definitely land, man. Just 800 meters. Definitely it will land. Now Last time vertical until velocity is where zero it now. came, no? Now just it will drop down. Until 30 meters it came. Yeah, Last don't. time. It will land successfully. Don't worry. Definitely it will land. Lot of applause Lot of applause. indicates that Till now. It's till too close, now man. the 0.7 performance meter has per been second. That nominal. means like this only. We are in the vertical descent phase 1. Done. Like the person, huh? Now it is phase 1. The altitude is being brought down from Listen, 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर Little bit more का tinted ना. हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। 600 meter. इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर आगे लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉरिंग करेगा। It is tilted, more tilted. We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. Seven meter per second is too high. man. इतने साथ ही वो कम हो गए, दोनों एक साथ 0 हो गए. देखो. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। कैमरा को नहीं करते.
अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। Hey, drill चलता है. We are Automatically it is approaching the as per the surface it is vertical matching. descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हैवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। 7.5 जी हाँ, I'm आप अगर watching. फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। 10 వచ్చా సార్ 2 meter per second. The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good Chairman. signature for the lander. He is happy now. अभी आप ये Modi is देख also सकते happy हैं now. कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। సక్సెస్ అవుతుంది సక్సెస్ ఇది ఎట్లా అంటే ఇటు సైడ్ ఉంది కదా 99% success చూడు. man. Currently, కరెక్ట్గా ఇక్కడికి only వచ్చినప్పటికి 2 ఆపాలి. engines ఆపకపోతే మళ్ళా are ఒక రోజు now వెళ్ళిపోతారు. being మళ్ళీ fired, దీంట్లో ఇట్లా పోయి and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. 50 meters, 60 meter, 59, 55 meters. 55. It's going fast, huh? और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। 30 కిలోమీటర్లు Exactly same time man. 30 మీటర్లు చూడు We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and 20 meter he is only. critically looking at the visuals. critically looking means what it means He's also a little bit conscious. internet is not in जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल Landed. Landed man. rover will come now. Landed man. Chairman is happy. Applauding. Let us all wait here from the Secretary Department of Modi Space and came Chairman with flag. ISRO, Shri S. Somnath. నరేంద్ర మోడీ This landed man. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से What is it? सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. मूवी आली है रुकना. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, less Namaskar. than triple R budget में sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our honorable Prime Minister to address us Maybe and this bless is us. a- Thank you, sir. political stunt also What? to win Narendra Modi. मेरे प्यारे It परिवारजनों, will be positive also to that party now. जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, और rover बैठ on the court में जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। rover बैठ also. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण Riksha means मुश्किलों के महासागर को पार करने का। oh shan shan ये क्षण Telugu जीत राज के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण మంచిపోతాడు అక్కడ 140 करोड़ धड़कनों के
सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। చూపిండ్రా డేటా అంటే ఈ మొగాలు ఎందుకు? हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, ఇదేరా కరెక్ట్గా इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, వెళ్ళిపోయాడు मैं इस समय అందరూ వెళ్ళిపోయారు ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं। लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय శిక్ష जश्न में डूब गया। हर घर में उत्सव शुरू बंद हो करना है। गया है। ये दोबारा हृदय से इधर नहीं जरूरत है, वो मैं म्यूट कर भी दो। अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं it's mine, 140 ना? करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत మెసేజ్ రండా चंद्रमा के उस check my message. दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है राजू हो गया जहां हो आज गया तक post करते हैं। दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें Chairman भी of ISRO. बदल जाएगी। వన్ బాల్ హెడ్ వన్ గైస్ No, he भारत में तो हम హి లెఫ్ట్ no, he's there only. From But last he is 1 the year, lead. he's the chairman. माँ कहते हैं और चांद को Sivan now. मामा बुलाते हैं। Previous was कभी Sivan. कहा जाता था Now this is S Somnath. चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब Yeah, बच्चे he's more कहा than करेंगे, that. चंदा मामा बस एक दूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to రాజేంద్ర address యాంగ్రీ ఇస్ కమింగ్ స్టాప్ ఎవరీవన్ all the people of the world, డోంట్ టీజ్ మోడీ the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. బాగానే ఇస్తుండు ఊరికి This is a year in which the world is witnessing India's నీకు G20 ఇష్టం లేదంటే ఏం presidency. చేశాను Our approach of one family,
one future is resonating across the globe. ఎవరు This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य बढ़ाएंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की